Om Shanti. Is my voice clear and audible? Okay, thank you. So we'll begin with a short meditation. Just sit back and relax. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Focus at the center of your forehead and experience that I am that consciousness that awareness जहाँ भी आपके थॉट जा रहे हैं पास्ट में या फ्यूचर में उनको प्रेजेंट में लेकर आएंगे I am a shining star shining at the center of my forehead. एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे See yourself as a star, a shining light. I am not my body. I am not my mind. I am not my past, not my future. Detach yourself from all the unnecessary thoughts. Just liberate yourself and tell yourself, I am a soul and I am the creator of my feelings and my thoughts. I am a peaceful being. शांति मेरा ओरिजिनल वर्च्यू है. Experience an ocean of peace within yourself. The calmness, the light in your brain. Your eyes, your face. And gradually this stream of peace
is radiating to your whole body. Om Shanti. Om Shanti. How's everyone doing today? Is my voice clear and audible? Okay. Is it low? Is my voice not clear? Someone's written voice is lower. Perfect, है ना अनुराधा ji? Thank you. Okay. All right. Thank you so much. Okay. So yesterday we started with the chapter number 2, the incredible power of your mind. And Karuna sister explained very beautifully about thoughts, what are thoughts, or what we feel, what we think is how we feel. Changing our thoughts is the only way to change our feelings. तो ये सब हमने कल किया था. So today we'll continue with this chapter. Now we're going to start from page number 26. Every thought counts. Okay, so I'll just share the screen with you all. Give me a moment. Okay, is the screen visible? Is the screen visible to everyone? All right. Okay. Okay. Thank you so much. All right. So we'll start with every thought counts. Our thoughts, words, actions, and behaviors constitute our karma. The law of karma states, as will be our karma, so will be our destiny. As will be our karma, so will be our destiny. Thoughts are the starting point, and destiny is where it all culminates. In fact, every thought that the mind creates amounts to our karma, because it all starts with our thoughts. पहले thoughts में आता है, फिर words, actions और behavior में आता है. And as we say that the face is the index of our mind. तो जो हमारे thoughts होंगे वो सबसे पहले हमारे face पे दिखाई देगा. And then फिर हमारे words, actions और behavior में constitute होगा. So the thoughts are the starting point that is the starting point of our karma. So it's very important to focus on what our thoughts are. Thus, our mind is not only the space where karma is first created, but it is also where most of our karmas are created. As our thoughts outnumber our words and actions. Don't we all know individuals who tap into the power of their thoughts to perform feats or achieve goals that are labeled as miracles? They create thoughts of steely determination,
faith and power, and then act on their thoughts to win against all odds. ये तो हमने अभी लास्ट बुक में भी देखा, यू कैन हील योर लाइफ में, हाउ लुईस है व्हेन शी टॉक्स अबाउट हर ओन स्टोरी, कैसे उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर किया सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज करके, पॉजिटिव एफर्मेशंस करके. So, thoughts can perform miracles. They have the power to perform miracles. So, that was an example of how important it is कि हम अपने thoughts को कैसे positive रखें. Okay. तो यहाँ पे सिस्टर शिवानी ने examples दिए हैं. Helen Keller, who lost her vision and hearing before the age of 2, was more than just a symbol of courage. She dedicated her life to improving the condition of those facing hearing and vision impairment through her lectures in over 25 countries. So, Sister Shivani is given example of Helen Keller. Unki bhi life is so inspiring. After losing vision, she still dedicated her life to improving the conditions of those who are hearing and vision impairment जिनको थी. Doctor Stephen Hawking became wheelchair bound when he was only 21 years old. Although his mobility and speech got affected, he went on to become a distinguished scientist, proving that physical disabilities need not become mental barriers. So, this is also such an important line. Physical disabilities need not become mental barriers. The mind and its superpower. Think of a relative who lives in another country. Think of your next door neighbor. Think of a vacation you went on 2 years ago. What was the color of your school uniform? How long did it take to think of each of them? So, how long did it take you to think of these 4 things? Of a relative who lives in another country, of your next door neighbor, of a vacation you went on 2 years ago. What was the color of your school uniform? Perhaps not more than a second or two. Our mind works at a fast speed and our thoughts also travel quickly. Remaining wherever you are right now, you can radiate a thought to someone who lives on a different continent because thoughts travel as energy vibration. You can radiate a thought to someone who lives on a different continent because thoughts travel as energy vibration. Everything in the universe is energy. This means at every moment, each of us vibrate energetically at a particular frequency. Our vibration refers to the quality of our energy. It is the cumulative result of our intentions, thoughts, feelings, words, and actions at any given moment. Just as radio frequencies can be heard but not seen, our vibrations can be felt but not seen. The word vibe is derived from vibration. When we pay careful attention, we can feel the vibes of another person. So, Sister Shivani ने explain किया है बहुत beautifully about vibrations, about our energy. जो हमारे thoughts होते हैं, जो हमारे feelings होते हैं, वो as energy दूसरों तक पहुंचते हैं. कई बार ऐसे होता है जब हम फोन करते हैं किसी को, especially someone who's living abroad, फिर वो कहते हैं कि अभी I was just thinking about you. All these things are the vibrations, that the feelings that
we feel about the person that reaches the other person. The mind does not have a physical form that we can see or touch, unlike the brain. Note that the mind is separate from the brain, though some people wrongly refer to them interchangeably. The mind is separate from the brain. The brain is a physical organ, while the mind is more intangible as it is energy. The brain is just a physical organ, while mind is an energy, is more intangible as it is energy. The mind creates a thought and sends a signal to the brain. The brain then brings that thought into action through the body. तो माइंड क्रिएट करती है थॉट और फिर सिग्नल भेजती है ब्रेन को. ब्रेन फिर brings that thought into action through the body. तो जब हमारे माइंड में कोई थॉट क्रिएट होता है तो वो ब्रेन को सिग्नल जाता है, फिर इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन. Nurture your child. Mine is a monkey mind, too fickle to stay still. Controlling my mind is as difficult as controlling the wind. Mind is like a fast galloping horse running absolutely uncontrolled. तो ये सब चीजें हम अपने आप को कहते हैं ना कितनी बार कि माइंड को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, घोड़े के जैसे भागता रहता है. So you might have heard someone speak this way about the mind. You might have spoken this way too, but these statements are far from the truth. It is only because we have not paid enough attention to our mind and its working that it comes across as being untamed or unruly at times. हमेशा हम ये कहते हैं कि नहीं, थॉट्स को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है. बट जब हमें वो अवेयरनेस आने लगेगी दैट वी कैन पे अटेंशन टू देम, जब हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है एंड वी बिकम अवेयर ऑफ इट, दैट इज व्हेन वी कैन स्टार्ट चेंजिंग. दैट इज व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड कि हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं. Visualize a mother taking care of her infant. Suppose she is alone and needs to complete all the housework as well. She leaves the child in the cradle and goes about her chores. But while doing everything, she frequently checks if her child is playing, sleeping, crying, or needs anything. To take care of the child, she does not neglect the house. And to take care of the house, she does not neglect her infant. She is responsible for both, but her child is her first priority, followed by the house. If the child starts crying, she immediately withdraws from her work and goes to her child, tends to the child's needs, consoles the child, and then returns to work. The mind is like our child. It is the child within. तो कितना ब्यूटिफुली सिस्टर शिवानी ने एक्सप्लेन किया है विद द एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड कि जैसे मदर होती है उनको घर भी संभालना है, बच्चे को भी देखना है, बट उनको पता है कि बच्चा ही पहली प्रायोरिटी है. अगर बच्चा रोने लगे तो सब काम छोड़ के पहले माँ बच्चे के पास जाएगी. तो वही सिस्टर शिवानी कह रही है, हमें भी अपने माइंड को एज अ चाइल्ड ही देखना है. We need to take care of it while taking care of other aspects like home, health, family, and career. Our first priority should always be the state of our mind. तो आप सबको लगता है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है, या यूजली हमारी प्रायोरिटी होती है कि नहीं पहले घर देख लेते हैं, पहले फैमिली को ना, हम अपने मेंटल हेल्थ पे इतना ध्यान देते ही नहीं.
तो यहाँ पे it's very important, Sister Shivani saying our first priority should always be the state of our mind. While going about other tasks, this child, our mind, might start crying, which means it might start feeling irritated, angry, scared, stressed, or hurt, or it might even start questioning why this, why that, why the other. तो कई बार ऐसे होता है ना कि ऑफिस में काम करते समय कुछ बॉस ने बोल दिया या घर पे ही फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया तो माइंड वी गेट इरिटेटेड एंग्री बट वी डोंट बॉदर हम बस करते रहते हैं बट यहाँ पे कह रही सिस्टर शिवानी एट दैट मोमेंट वी नीड टू इमीडिएटली विड्रॉ फ्रॉम आवर टास्क फॉर अ मिनट listen to what the mind is saying, counsel it, silence its chatter, and then resume our task. So, it's just like a little child. You need to console your mind. अपने thoughts पे ध्यान देना है कि क्यों irritation हो रही है. थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के silence में बैठ के अपने मन को शांत करके then again we can go back to our task. When a child makes a mistake, we lovingly correct and teach her the right way to do something. The same needs to be done with our mind. This child within is not in our control today only because no one has taught us what to think, how to think, or how much to think. This is so important. आज क्यों हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हमने कभी माइंड को सिखाया ही नहीं है what to think. कितना सोचना है क्या सोचना teach it about the rights and wrongs. We need to parent our mind and teach it about the rights and wrongs. We need to discipline this child with love and assertiveness rather than using aggression. Our mind learns whatever it is taught and obediently follows every instruction we give. Our mind learns whatever it is taught and obediently follows every instruction we give. So we have to be very patient with our mind. मतलब ये नहीं कि जब माइंड में नेगेटिव चल रहा है तो हम और अग्रेसिव ना हो जाएं. बहुत पेशेंटली अपने माइंड को टेमर डाउन करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं. Similarly, while dealing with others, let us remember that we are dealing with the child within them. So the same applies when we are dealing with others. Let us remember that we are dealing with the child within them. If we say to ourselves, I cannot trust people ever again, our mind, which is listening to us, accepts the statement. Thereafter, before we meet people, our mind starts chattering. Do not trust this person. You cannot trust anyone. But suppose one day we tell our mind, let me trust people. It makes my life easier. From that day on, we start teaching the child within another way of being. तो पहले जब हम अपने माइंड में ये कहते हैं ना हम किसी को ट्रस्ट नहीं करते तो वही हमारे बिहेवियर और एक्शंस में आता है और वैसा ही हम अट्रैक्ट भी करते हैं. But then when we start telling ourselves कि नहीं, it is good for you to trust, it will make your life easier. तो फिर वही हम बच्चे को सिखा रहे हैं. So then the mind stops doubting people due to past experiences. So we just need to patiently remind it, no more doubting others. I trust everyone. Very soon, the mind will learn and follow our instruction. Okay. Can you ever stop thinking? Is everyone with me? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको?
All right. Thank you. Yeah, will be few only, but I have some comments like we should not have to be trust everyone because we are a social responsible person. We have some kind of liabilities, and we will thinking that only that I had to be do like that. I had to be do these kind of things and all. So I would say that we should trust ourselves only. That's what I feel. Hmm. But then, see, that's again the thought that you're creating. And then, I if don't know. we, I just told that the fact because if I am a social responsible person, I am responsible to take care of my family, and I had to take care of my the people surrounding with me, and all those things are responsible to me. So these things are in my mind. So how come I can clear my mind? yeah, see, that's the thing, if we create the thought that I can't trust anyone, so you'll never be able to trust anyone. That's exactly what, Sister Shivani is saying as well, that it's the thought that we create. Obviously, we have to be careful in who we confide in, or whoever we meet, their behavior. We have to look at all the aspects, but we don't need to create the thought that I don't need to trust, I can't trust anyone, nobody is trustworthy. That thought needs to be changed. When we start, affirming ourselves and keep telling ourselves, no, we can trust people, people are trustworthy. So that is what we'll attract as well. Does that make sense? Do we can be away from our social responsibilities? Like if No, I we am a don't have father, to be I am a away. son, if I am a friend, and I have some such responsibilities, I am a human being. So this kind of responsibility we cannot leave, right? No, definitely. You don't have to leave your responsibilities. You just have to bring more trust by creating positive thoughts. Obviously, you have to look at your scenario and see, what is best for you. But just all positive affirmations, that is what you'll attract then. We'll have a discussion towards the end, and then maybe we could talk about it in more detail. Yeah, sure, sure. Not of this. Thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you. Okay. So where were we? Okay. Whether we are idle, yeah, we started with this new topic. Can you ever stop thinking, right? Whether we are idle in the middle of an important task, meditating, or sleeping, our mind never ceases to think. Did you know that thoughts are created even when a person is in a coma? And even after a soul leaves the body? In other words, there comes a moment when our heart stops beating, the pulse vanishes, and our breath comes to a halt. But even then, our mind continues to create thoughts. Do take a moment to appreciate the relentless nature of the mind. Okay. An EEG, electroencephalogram, which has an array of other uses, shows that our mind creates tens of thousands of thoughts in a single day. तो कल करुणा sister भी यही बता रहे थे ना कि our mind creates how many thoughts? More than 6,000 or something. No, it says tens of thousands of thoughts in a single day. When the mind is relaxed, peaceful, and calm, the number of thoughts come down. When it is stressed, aggressive, or anxious, the number of thoughts shoot up. Remember, every thought makes you feel a certain way: comforted, confused, delighted, resentful, fearless. So the thoughts then come into our feelings. So we change our thought and we then can change our feeling as well. Take another moment to ask yourself, how many of the thousands of daily thoughts I have are pure, positive, and comfortable? तो थोड़ा अपने थॉट्स पे अगर हम ध्यान दें तो हम देखें, नोटिस करें, अवेयर रहें कि हमारे थॉट्स कैसे हैं दिन में. What type of thoughts are we having?
Are we feeling pure and comfortable? हमारे feelings में ही आ जाएगा ना. If we are feeling comfortable, अगर हमें सही thoughts आ रहे हैं, so we'll be happy, we'll be delighted. But वही अगर हम if we are feeling low, if we are feeling disturbed, irritated, so we need to look on our thoughts कि हमारे mind में क्या चल रहा है exactly. क्यों हम low feel कर रहे हैं, क्यों हम resentful feel कर रहे हैं. Although emptying the mind and becoming thought free sounds tempting, it is impossible. The aim should not be to stop thinking, but to discipline the mind to think right. तो कई बार ये मेडिटेशन में भी होता है. कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, जब मेडिटेट करें तो बिल्कुल कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए. तो ऐसा नहीं होता है. थॉट्स तो वोंट स्टॉप, थॉट्स तो कंटिन्यूसली चलते ही रहेंगे. बट ये है कि वी नीड टू बी मोर अवेयर कि हमारे थॉट्स कैसे हैं. So we need to discipline the mind to think right, not to stop thinking, but to discipline the mind to think right. Okay, so there are four kinds of thoughts. Knowing that the mind is creating thoughts throughout the day after day, year after year, birth after birth, one may wonder if the mind ever feels exhausted. It is not the quantity, but the quality of the thoughts that decide if our mind feels fresh or tired. ये सारे जो सिस्टर शिवानी ने हाईलाइट करवाए हैं ना, ये सब इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं that we need to remember. We need to churn on that it's not the quantity, but the quality of thoughts that decide if our mind feels fresh or tired. अगर हम ढेर सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस ले उन्हें रिपीट करें, हम वो थॉट्स अपने माइंड में लाए, सो दैट विल मेक अस फील रिफ्रेश्ड. बट अगर हमारे माइंड में सिर्फ एक ही वो नेगेटिव थॉट चलता रहेगा, तो हमारा माइंड बिल्कुल विल फील एग्जॉस्टेड. This is why we need to spend a few minutes every day to observe our thought patterns of what we think about ourselves and how we think about other people, situations, and the world at large. Broadly, our thoughts can be classified into four types: pure, neutral, toxic, or wasteful. Pure thoughts. These are elevated, positive, powerful, and selfless in nature. Pure thoughts are of peace, compassion, love, happiness, forgiveness, gratitude, contentment, kindness, and acceptance. They are free from attachments and expectations. They equip us to see the best in every person and situation. We do not question, complain, judge, or criticize when our thoughts are pure. Creating pure thoughts does not mean we expect the best to happen at every moment. It just means we accept that whatever happens is accurate for that moment. Thoughts of acceptance keep us stable and empower us to put in our best in the next moment and influence the situation. Also, creating pure thoughts does not imply that we overlook or endorse other people's mistakes. It just means that we do not let our state of mind get affected by them. Pure thoughts enables us to remain stable and then discipline or advise the other person. तो प्योर थॉट्स मतलब जो भी बाहर की सिचुएशन हो, जो भी चल रहा हो, हमारा माइंड स्थिर हो. जैसे बाबा कहते हैं ना, स्थिर. तो स्थिरता होनी चाहिए कि कुछ भी बाहर चला हो, मेरे माइंड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. मैंने प्योर फीलिंग्स ही रेडिएट करनी है. इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कोई गलत कर रहा है तो हम उसको बढ़ावा दें या नहीं, बट हमें अपने माइंड में वो प्योर संकल्प
ही क्रिएट करने हैं फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, no matter what the situation is. Let us remember that our mind cannot instantly create a series of pure thoughts when a challenging situation arises. Such thoughts result from consistent and systematic practice. तो ये जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे पॉजिटिव एफर्मेशन से, तब जब फिर हमारे सामने जो सिचुएशन आएगी तो हम उस हिसाब से रिएक्ट कर पाएंगे. So it there's a lot of practice. It doesn't happen overnight कि हम pure thoughts create करना शुरू करें. A lot of it, you have to go through a system. A lot of practice is needed so that जब situation आए, so we are prepared. We are prepared for that situation. Neutral thoughts. These are thoughts pertaining to our activities or actions, ranging from the mundane to the sophisticated. They often relate to our roles and responsibilities in personal and professional life. Example of neutral thoughts are I need to do this, what is her phone number, or he will meet me next. These thoughts are neutral since we are neither creating positive nor negative energy through them, which means we are neither energizing our inner power nor depleting it. तो ये जो रोज के हमारे जो मंडेन जो काम है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे हमें करना है, वो न्यूट्रल थॉट्स हैं. उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम. But often in a subtle and unaware way, we pile up negative and wasteful thoughts as a follow up to neutral thoughts. For instance, it is time for breakfast is a neutral thought, but we often follow it up with thoughts like, why is it not ready on time? The dining table is also not set. Don't they know their job even after all these years? No matter how much I explain, they will never understand. In this series of thoughts, there is only one neutral thought, which is it is time for breakfast. The remaining are either negative or wasteful. तो ये कितने ब्यूटीफुली शिवानी ने समझाया है कि ये हमेशा होता है कि न्यूट्रल थॉट तो हम क्रिएट कर देते हैं कि अच्छा हमें अभी ये काम करना है, बट देन उसके साथ ही जो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ये टाइम से नहीं हुआ तो अरे ये अभी तक आए नहीं, ऑल दोस थिंग्स दैट आर अ फॉलो अप ऑफ द न्यूट्रल थॉट्स. दिस इज सो रिलेटेबल आई फील. ओके, so the next is toxic thoughts. These are clearly harmful as they take away our peace and stability. Thoughts of ego, anger, greed, hatred, fear, criticism, disagreement, laziness, bias, jealousy, and stress are toxic or negative. Such thoughts are driven by selfish motives and expectations. So, creating them neither benefits the situation nor the people involved. The mind is habituated to creating several toxic thoughts as soon as a situation is not favorable. जैसे कुछ हो जाए जो हमारे इट्स अगेंस्ट आवर बिलीव्स या हमारे एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर रहा, तो वो नेचुरली ये सब थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं. If we do not pause and change the toxic thoughts created in one scene, we tend to carry the emotional disturbance into a subsequent scene and turn that also into a negative experience. This cascading effect causes our mind to accumulate negative thoughts and emotions. Over prolonged periods, they harm our emotional, mental, and physical health and our relationships. तो होता क्या है कि एक बार एक टॉक्सिक थॉट आना शुरू हो जाए, अगर हम उस पे ध्यान नहीं देंगे, if we won't be aware कि this thought is it's not right, it's
it's going to harm me, we'll keep taking that into other situations and experiences. So, over a prolonged periods, they harm our emotional, mental, and physical health and our relationships. तो अगर हम वही थॉट को पकड़ के रहते हैं रिलेशनशिप्स में भी, तो देन फिर बाद में वही होता है, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं. तो वी नीड टू सी द रूट कॉज कि कहाँ से थॉट क्रिएट हो रहा है एंड वर्क ऑन इट. Wasteful thoughts carrying no constructive purpose. These thoughts are exactly what they are labeled, wasteful. We often spend unreasonable amounts of time thinking, why did he have to do that? What if I do not get admission in that university? Or look at how she behaves. When we get into the why, where, when, and how of things which are not in our control, our mind starts creating a series of wasteful thoughts. When we get into the why, where, when, and how of things which are not in our control, our mind starts creating a series of wasteful thoughts. ये तो जैसे ब्रह्मा कुमारीज में मुरली में भी बाबा कहते हैं ना कि फुल स्टॉप लगाना है, why, where, when, question mark नहीं लगाना है. So this question mark is wasteful thoughts. जब भी हम question put करते हैं, that is a wasteful thought. These thoughts dwell on the events we can do nothing about, like ruminating or reminiscing about the past and anticipating or worrying about the future. तो यही wasteful thoughts होते हैं जो past या future में हम सोचते रहते हैं. Even deliberating other people's behavior and forming opinions about things not concerning us are wasteful thoughts. They might seem harmless, but they are silently harming us by tiring the mind and wasting our limited time and energy. Either we had to face hardship at work, someone betrayed us, or a relationship failed. The incident has already happened and we cannot do anything about it now. Research shows that 85% of our daily thoughts are wasteful. We can do the math. Of the remaining 15%, what is the percentage of negative and neutral thoughts? And how small is the percentage of pure thoughts? Creating one negative or wasteful thought after another, creating one negative or wasteful thought after another depletes our mental energy reserves. This is why we feel mentally tired or fatigued even when leading leading physically comfortable lives. So this is why we feel mentally tired or fatigued even when leading physically comfortable lives. But our mind, which creates over 85% of wrong thoughts, is perfectly capable of creating 100% pure and elevated thoughts. That is our potential, and that is the journey of soul strengthening that we have embarked on. Okay, someone's microphone is on. So please mute it. Okay, I think we've come to the end of this chapter, so I'll just stop here. All right. So, we'll begin with our takeaways for today. So, who would like to share what they've understood from uh, today's session? Hanji, Pooja sister. Okay. ओम शांति सिस्टर. Om Shanti sister. सिस्टर जो सिस्टर शिवानी ने और जो आपने भी रीड करा 4 टाइप ऑफ थॉट्स पैटर्न जो हमारे होते हैं टॉक्सिक थॉट, कि अगर एक टॉक्सिक थॉट आता है तो वो बहुत सारे टॉक्सिक थॉट्स को अट्रैक्ट करता है, वो एक सीरीज बन जाती है और फिर वो हमारी एनर्जी हम ड्रेन करते हैं. तो सच में 24/7
फुल टाइम तो नहीं होता है ये, पर कुछ कुछ मिनट्स में वो होता है, तो वहां अवेयर है ना कि वहां हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है। दूसरा ये कि जब एक ब्रदर है जो आपसे क्वेश्चन कर रहे थे रीडिंग सेशन के दौरान, तो हाँ उसमें जी। हुआ था ना कि वी कैन ट्रस्ट एवरीवन, या पता नहीं उस तरह का ही कुछ क्वेश्चन था उनका। आप हम्म। बोल रहे थे कि हमें वैसी थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है। ये तो है कि हमें एक्शंस और बिहेवियर तो देखना है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमें केयरलेस बन जाना है, कि कोई सामने से कोई कुछ भी कर रहा है और हम थॉट क्रिएट करते रहे कि प्योर सोल है, वैसे नहीं बनना। मुझे भी वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि प्योर थॉट्स हम। हमें अपनी फीलिंग्स को हर एक के लिए प्योर रखना है, बिकॉज इटर्नली वी आर ऑल प्योर सोल्स, वी आर ऑल द सेम। तो वो समानता का वो तो रखना ही है कि वी आर ऑल सेम। बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू स्टार्ट अप्रूविंग ऑफ द रॉन्ग, वो तो हम्म। नहीं करना है। बट हमारे थॉट्स और फीलिंग्स प्योर होने चाहिए हर किसी के लिए भी। ओके ओके। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाँ एक जी। चीज और बोलना है, एक चीज और बोलना है, हाँ मतलब जी। कुछ भी समझ लीजिए। जैसे वो प्योर थॉट जब आप पढ़ रहे थे उसकी डेफिनेशंस, तो उसमें ऐसा था, उस लाइन उसमें एक लाइन थी कि सब कुछ अच्छे अच्छा नहीं होगा, सिचुएशंस या पीपल हमारे अकॉर्डिंग ही नहीं होंगी सारी, लेकिन हम थॉट्स के थ्रू ही तो, अफर्मेशंस करके ही तो हम वो पाते हैं ना जो हमें पाना है। तो फिर वो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं है, वो चीज भी क्लियर कर दे थोड़ी। दोनों में um, डिफरेंस हुआ फिर। हाँ जी, देखो सिचुएशंस तो आएंगी, वील मीट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, सबके अलग संस्कार हैं, सबके अलग वे ऑफ थिंकिंग है, बिहेवियर है। बट हमें अपने थॉट्स को क्लियर रखना है, हमें वो प्योर फीलिंग्स और जजमेंट नहीं करना, एक्सेप्टेंस क्रिएट करना है। तो वही सिस्टर शिवानी कह रही है कि there will be people who will not be on the correct path, या कुछ नहीं होगा मैचिंग, बट हमारी स्थिति में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं ना कि मुझे सफलता मिल जाएगी, या मुझे ये जॉब मिल जाएगी, या मुझे मेरी ये हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लेकिन सिस्टर हम्म। शिवानी मैम ये कह रहे हैं कि हमारे अच्छा सोचने से जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही बाहर मिलेगा। मैं वो उस वे में पूछ रही हूँ कि मुझे अगर कोई चीज को मतलब पाना है, इसके लिए अफर्मेशंस तो करूंगी ना, मैं ये पूछ रही थी ऐसा। हाँ जी। हमारा हमने अपने सिर्फ प्योर थॉट्स और पॉजिटिव एफर्मेशन ही क्रिएट करना है इन एनी सिचुएशन। बाकी जो सिचुएशन है, कुछ कभी आ जाती है हेल्थ रिलेटेड या कुछ, उसमें देन देयर इज आवर प्रीवियस बर्थ, आवर karmic accounts that come into place. But basically what we think is what we are and what we attract. तो जब हम अपना पॉजिटिव ही क्रिएट करेंगे, तो हमें आगे से भी वही मिलेगा। अब जैसे हमने लास्ट बुक में भी रीड किया कि लुइस हे, शी इवन क्योर्ड हर कैंसर बाय जस्ट पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्रिएटिंग दोज पॉजिटिव थॉट्स। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, हमने पॉजिटिव ही सोचना है। हर जैसे पापा कहते हैं कि हर सीन कल्याणकारी है, जो हो रहा है अच्छे जी के लिए ही हो रहा है। तो हमने बस वही थॉट क्रिएट करनी है। जी, माय टेक अवे है आज का, जो हाँ आपने जी। अभी रिलेशनशिप में जो लास्ट है ना, कि हमने अगर थॉट्स में भी कुछ पकड़ा हुआ है तो वही हाँ जी। रिफ्लेक्ट करता है हमारे बिहेवियर में, तो वो मेरा टेक अवे है कि मुझे उसे वहां से भी इरेज करना है। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी। ओके। हाँ जी ब्रदर। Om Shanti. ओम शांति So ब्रदर। today's today's takeaways, as the first topic was every thought counts. So as uh, our thoughts, words, and actions, all these constituted the karma which we create. And Sister Shivani gave us example of two examples like Helen and the Dr. Stephen as well. And the second takeaways is like we have to treat our mind as a child, because whatever, if sometimes if you want that if you want that our child will learn something, then we treat it very carefully or with the love. So
accordingly we have to treat our mind as a child. And the third one is like as even in the meditation as well, whenever we say that be thoughtless, so even creating this thought be thoughtless is also creating a thought. So as it's impossible that we cannot be thoughtless, as sister gave us many examples. And the last one which I like about the four types of thoughts, the neutral, positive, and the negative and the wasteful thoughts. So these are my takeaways. Thank you, sister. Thank you. Thank you so much for sharing. Thank you, brother. Okay. Um, okay, Supriya sister. Hanji. ओम शांति सिस्टर। Om Shanti. Hanji. सिस्टर मैं वो जो भाई जी ने क्वेश्चन किया था, हम दूसरों को ट्रस्ट कर सकते हैं ये नहीं, मतलब जो भी हमारे मन में रहता है कि अगर सामने वाला नेगेटिव कुछ मतलब बिहेव कर रहा है, देन हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा ये हमारे हाथ में है। वी हैव द कंट्रोल। हमें ये जस्टिफाई नहीं करना है ना, कि कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर हमारे में आ रही है तो हम जस्टिफाई अगर कर देंगे तो फिर वो हमारा जो इनर पावर है वो फिर कम होता जाएगा। कहीं ना कहीं हम मतलब वही है कि हमारा अपने पर कंट्रोल रहना जरूरी है। सामने वाला तो मतलब सिचुएशंस तो आएंगे ही, अनफेवरेबल सिचुएशन जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है ना, लेकिन हमें क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। इट्स जस्ट दैट कि हमें रिएक्शन, हम कौन से मोड पे चल रहे हैं, या तो हम रिएक्शन मोड पे चल रहे हैं, वी आर मतलब हम एंगर दिखा रहे हैं या वट एवर एनीथिंग नेगेटिवली हम कर रहे हैं, या फिर हम अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये मतलब मैटर करता है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो फिजिकल डिसेबिलिटीज है वो हमारे मेंटल बैरियर्स को मतलब ये डिसाइड नहीं करते। लाइक हेलन केलर का हमने एग्जाम्पल देखा या स्टीफन हॉकिंग का देखा है। तो ये भी है कि हमारे माइंड का पावर कितना मतलब हम मतलब रहता है, बट है ना। तो और दूसरा है कि हम लाइक ऐसा नहीं है कि हम थिंकिंग को बंद करें या लाइक वो हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। वी जस्ट हैव टू डिसिप्लिन आवर माइंड हाउ टू थिंक राइट। एंड बस जो हमारे वाइब्रेशन है उसकी क्वालिटी को हम मतलब चेक करें, क्योंकि वो जो एनर्जी लेवल होती है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। एंड Hanji. हमने अपने माइंड का और उसकी जो वर्किंग उसका जो तरीका है उस पे हमने ध्यान नहीं दिया है। एंड कभी कभार इसीलिए मतलब वो जैसे अनटेम्ड की तरह मतलब कुछ कुछ भी सोच रहा है। तो हमें ये मतलब एक छोटा बच्चा है उस तरह से अपने माइंड को भी मतलब लेके मतलब समझना है कि वो भी एक छोटा बच्चा है। मतलब एंड और बचपन से ही हमने मतलब किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हाउ टू थिंक राइट, और है ना, मतलब कैसे सोचना है एंड कितना सोचना है वो भी नहीं सिखाया गया है। तो वही है कि लेकिन हम अभी भी चाहें तो इट्स हाई टाइम कि हम सिखा सकते हैं। लाइक और वो मानेगा भी, इंस्ट्रक्शन हम जो देंगे जैसा देंगे है ना, वो इट्स मतलब ओबीडियंटली मानेगा भी। और मतलब और दूसरों के साथ भी जब हम डील कर रहे हैं तब भी हम ये याद रखें कि हम भी उनके मतलब उनको एक छोटे बच्चे जैसा ही ट्रीट करें, है ना, कि लाइक क्योंकि माइंड सबका ही मतलब आज के डेट में बहुत सोल्स वीक हो चुकी हैं, राइट। तो वो भी मैटर करता है। एंड फिर जो कैटेगरी वाइज थॉट्स का था, प्योर थॉट्स, न्यूट्रल थॉट्स एंड टॉक्सिक और जो भी वेस्टफुल था। तो प्योर थॉट्स तभी आते हैं मतलब जब हम स्टेबल आपकी आवाज चली गई मतलब सिस्टर. और उस स्टेबिलिटी के साथ हम न्यूट्रल, जी न्यूट्रल थॉट्स में लाइक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी हम जो डेली लाइफ में या प्रोफेशनली कर रहे हैं। आज का जैसे वो एग्जांपल कितना ब्यूटीफुल था कि मतलब इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन उसमें भी कितने सारे सीन्स मतलब कितने सारे वो क्रिएट हो जाते हैं मोस्टली, मतलब टॉपिक एक ही है बट है ना। तो Yeah, एनीवेज that तो was so या relatable. एग्जैक्टली। एंड और जो टॉक्सिक थॉट्स की बात आई कि जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं होता है तो फिर वो टॉक्सिक थॉट्स भी आने लगता है। एंड नेक्स्ट में था जो वेस्टफुल थॉट्स रहता है कि
आइदर पास्ट या फ्यूचर रिलेटेड जो भी रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, आइदर हो चुका है या फिर हम फ्यूचर के लिए वरी, मतलब टेंशन ले रहे हैं या वट एवर, तो इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, बट स्टिल माइंड इज थिंकिंग, दो इट्स ऑटोमेटिकली ये वेस्ट में ही जा रहा है। एंड वही है कि हमारा, और लास्ट में जैसे नेगेटिव या वेस्ट हम अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो डिप्लीट हो रही है, जो रिजर्व है, हमारी जो ओरिजिनल वेलबींग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। तो इसलिए हम चेक करें, आज के लेसन से इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि हर चीज का हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, हम दूसरों पर कंट्रोल ना दे दे, है ना, कि वो जैसा बिहेव, भले ही ठीक है वो खराब बिहेव कर भी रहे हैं, बट स्टिल आई हैव द choice how to respond, right? Thank you, Right. sister. Om Shanti. Thank you so much, sister, for explaining so beautifully. Thank you. Okay, Anuradha, sister. Thank you. Om Shanti. Today's my takeaway is every thought counts and we are accountable to every thought we create. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ा सा स्लो आ रही है सिस्टर. हाँ. Every thought counts and we are Yeah. accountable to every thought we create. तो पिछले सेशन में बताया गया कि हमने thousands of thoughts create होते हैं, तो जिसके वजह से हमारा पावर कम होता है, लेकिन हम थॉटलेस स्टेज में नहीं जा सकते, तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को चेंज करें, जिसके कारण हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं. ये मेरा टेक अवे है. और ये एक दिन में शिफ्ट नहीं होगा, धीरे धीरे शिफ्ट होगा. पॉजिटिव थिंकिंग में हर दिन एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा. तो it is, we should have patience with our mind and discipline it with love and assertiveness, and not use you know एकदम डिसिप्लिन माना, डिसिप्लिन के बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए. वी शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस एंड देन ट्रीट आवर माइंड वेल and create our thoughts irrespective of people and situations, because हमारी हेल्थ इफेक्ट हो जाता है जब भी हम लो लो वाइब्रेशन के थॉट्स क्रिएट करते हैं. तो ये मेरी टेक अवे है. थैंक यू. हाँ जी, थैंक यू सो मच सिस्टर. थैंक यू. हाँ जी, रोहिणी सिस्टर. Om Shanti. ओम शांति Uh, सिस्टर. my today's takeaway is that every thought that the mind creates amounts to our karma. मतलब हर thought, every thought, every moment जो हम सोचते हैं unknowingly भी, वो भी हमारा कर्मा में इंक्लूड हो जाता है, whether positive, negative, anything. ये एक हुआ. The another thing is the aim should not be to stop thinking, but to discipline the mind to think right. जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इट शुडंट बी लाइक स्टॉप थिंकिंग कंप्लीटली, बट टू स्विच नेगेटिव कोई भी थॉट कि इसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, इसके बजाय उनकी बात भी समझ लो कि हो सकता है उनकी बात भी सही हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो उस तरफ, टू गिव इट अनदर थॉट, कोई एक अच्छा थॉट दे दो, टू स्विच इट फ्रॉम नेगेटिव टू थोड़ा पॉजिटिव कि उनकी बात भी सही हो सकती है. Another related to this only, our mind cannot instantly create a series of pure thoughts when a challenging situation arises. Such thoughts result from consistent and systematic practice. तो अभी जब कहा कि वी कैनॉट, मतलब इंस्टेंटली हम स्टॉप नहीं कर सकते, जो भी थॉट्स आते हैं इंस्टेंटली वी कैनॉट स्टॉप. तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे, यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम आज पॉजिटिव ही रहेंगे, तो सडनली कोई नेगेटिव थॉट आता है एंड देन वी समटाइम्स कोलैप्स कि अरे एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम भी आउट ऑफ कंट्रोल गए, हमने भी गुस्सा दिखाया, वी आल्सो बिकेम वायलेंट, तो मतलब हमारे एफर्ट्स हाँ खाली गए. जी. तो इस सिचुएशन में हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि
ऐसे सिचुएशन में कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कि पूरी तरह से मतलब हम सब कुछ छोड़ के ये करें कि हमसे नहीं होगा। इन, हाँ, इन, हमने खुद को समझाना है कि प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा, ठीक है आज नहीं हुआ, नेक्स्ट सिचुएशन में होगा, दैट वे। हाँ So जी। these are my takeaways. Thank you. Thank you so much, sister. Session was nice. Thank Thank you. you. Thank you, sister. हाँ जी. Okay. Anyone else would like to share? Okay. Okay, so we've got some messages in the chat box. Okay, Raghav brother has written, mind and brain are separate. Mind is intangible, brain is physical organ. Mind creates thoughts and gives signals to brain for actions. Right. बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ शिव बाबा says. Right. Today's takeaway is how many of thousands of daily thoughts as I have are pure, positive, and comfortable. Second takeaway is that teach our mind to what to think, how to think, or how much to think. Make our mind okay. Uh, hold our mind, I think. Yeah. Okay. Thoughts have the power to create miracles, right? Okay. Thank you so much for sharing. Okay. So I think we'll end the session today with a beautiful song. All right. Yeah. Okay. Thank you so much, everyone, for joining. And we'll see you again tomorrow. All right. Thank you. Lost for many years, but I found myself. Now the skies are clear. Oh, I've never felt this calm before. I braved the storms. I no longer fear what I find inside myself. I am stronger, I am kinder. When I turn around, I'll find my way up and out. I create my destiny. Oh, I feel like I am healing. When I'm caught up in anxiety, I am breathing, I find relief in the birds that sing in harmony. The sun shining, the ocean breeze. I create my destiny. Oh, I feel like I am healing. I was stuck in fear, now I embrace my faults. I am safe here, I no longer feel small. I still have days I waste away, but I'm in the clear. I've let down my walls. I am stronger, I am kinder. When I turn around, I'll find my way up
Thank you so much, everyone, for joining. Have a wonderful day. We'll see you again tomorrow. Om Shanti.